हाँ जी, समझ आया कुछ? शुक्र है। चलें, लेट्स सी। ऑलराइट, अच्छा, क्वेश्चन क्या है 25 to 30? व्हाट प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डाइज? अब आपने करना क्या है, नेचुरल डाई को उसके प्रॉब्लम के साथ आपने मैच करना है कि डाई ये था और प्रॉब्लम ये था, ठीक है? और हर डाई का अलग अलग प्रॉब्लम होगा। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन ए, प्रॉब्लम्स, इट इज एक्सपेंसिव। अब कोई एक नेचुरल डाई जो वो बोलेगा बहुत महंगा था, उसके लिए ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन बी, कलर इज टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कलर, कि उसका रंग इतना पक्का था कि उतरा ही नहीं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कलर को अंडरलाइन कर लें। कलर इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये अभी आपने पढ़ा है, नॉट परमानेंट, द कलर वॉज नॉट परमानेंट, ये आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है? उसके बाद वेरी पॉइजनस, पॉइजनस की जगह पे डेंजरस का वर्ड आ सकता है, टॉक्सिक का वर्ड आ सकता है, टॉक्सिक, कि कोई ये कलर था जो बड़ा डेंजरस था, पॉइजनस था, डेंजरस, टॉक्सिक एंड ऑल दैट। ऑप्शन ई, इट कैन डैमेज द फैब्रिक, कि उसने जो रंग यूज किया उससे कपड़ा ही गल गया, नहीं होता कपड़ा ही जल जाता है, कोई ऐसा तेजाबी रंग होता है कपड़ा ही खराब हो जाता है। जैसे बाज़-औक़ात आप वो जो घर में क्या यूज करते हैं वाइट कलर के लिए, ब्लीच, हाँ ब्लीच से कपड़ा खराब हो जाता है, तो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या है, कलर में बी अनएक्सपेक्टेड, बेचारे ने कोशिश की कि रेड हो जाए, वो हो गया ब्राउन, ठीक है? या उसने कोशिश की कि ब्लैक कलर आए लेकिन कलर आया ग्रे, तो अनएक्सपेक्टेड कलर। ऑप्शन जी, अनसूटेबल फॉर सम फैब्रिक्स, कि कुछ फैब्रिक के साथ वो अनसूटेबल नहीं था, फर्ज करें कहता है कॉटन के लिए सूटेबल नहीं था, नायलन के लिए था, समथिंग लाइक दैट। और एच है नॉट जनरली अवेलेबल। अच्छा, नॉट जनरली अवेलेबल की जगह पे वर्ड आ सकता है इट वॉज वेरी रेयर, इट वॉज वेरी रेयर, कि आमतौर पे दस्तियाब नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि इट इज़ वेरी रेयर। रेयर कहते हैं जो बहुत कम मिलता है, जैसे नहीं हम कहते हैं रेयर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, के परिंदों की नायाब नस्लें, लाइक दैट। ओके, टर्मिक, देखते हैं जी टर्मरिक के बारे में क्या कहते हैं। टर्मरिक तो हम घर में भी यूज करते हैं ना, टर्मरिक, या So what natural dyes did you look at? Well, one was turmeric. The colour's great. It's a really strong yellow. It's generally used in dishes like curry. It's meant to be quite good for your health when eaten, but you might find it's not permanent when it's used as a dye. A few washes and it's gone. Right. it's not permanent when it is used as a dye, few washes and it's gone. Option C, color is not long lasting, it's not permanent, few washes and it's gone, कि 2-4 दफा कपड़ा धुला नहीं तो रंग गया, रंग गायब हो गया। हाँ, ओके, आप कहेंगे हमारे कपड़ों से तो उतरता नहीं है, हल्दी का दाग लग जाए तो उतर जाता है। ओके, उसके बाद है बीटरूट। बीटरूट ये रेड कलर की होती है, बीटरूट, ओके, चुकंदर, या I used beetroot as a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. Disappointing. okay, I ended up with red hands and the wall watery cream shade. So what does it mean? Color may be unexpected. Option F, दोबारा सुने। I used beetroot as a dye for wool. When I chop up beetroot to eat, I always end up with bright red hands. But the wool ended up just a sort of watery cream shade. Disappointing. Disappointing, disappointing का मतलब है unexpected, ठीक है? F will be the right answer. Question number 27, Tyrion purple, देखते हैं Tyrion purple के बारे में क्या कहते हैं। There's a natural dye called Tyrion purple. Have you heard of that? Yes. It comes from a shellfish. And it was worn in ancient times, but only by important people, as it was so rare. I didn't use it. It fell out of use centuries ago, though one researcher managed to get hold of some recently. But that shade of purple can be produced by chemical dyes nowadays. Okay, Tyrion purple, it was so rare. It was so rare means option H. There's a natural dye called Tyrion purple. Have you heard of that? Yes. It comes from a shellfish, and it was worn in ancient times, but only by important people, as it was so rare. Only by important people as it was so rare. Okay, in the past, purple color जिसने भी पहना होता था ना, sign था, status symbol था,
कि पर्पल कलर बहुत महंगा बनता था, तो जिसने भी पर्पल कपड़े पहने होते उसे कहते थे वाओ दैट्स ऑसम। क्वेश्चन नंबर 28, लॉगवुड, जो लकड़ी नहीं होती उससे कौन सा कलर आता है वैसे? लकड़ी, जली हुई लकड़ी, ब्लैक आना चाहिए, कोयले से जो कलर आता है, लॉगवुड। सो लेट्स सी व्हाट डू दे से अबाउट दैट। Did you use any black dyes? Logwood. That was quite complicated. I had to prepare the fabric so the dye would take. I hope you were careful to wear gloves. Yes, I know the danger with that dye. Good. It can be extremely dangerous if it's ingested. It could be extremely dangerous if it's ingested. Extremely dangerous means very poisonous. Option D. और आपने सिर्फ A B C D लिखना है, ठीक है, पूरा पूरा ऑप्शन नहीं लिखना। Question number 29, Cochineal. Now, presumably you had a look at an insect-based dye, like cochineal, for example. Yes, I didn't actually make that. I didn't have time to start crushing up insects to get the red colour, and anyway, they're not available here. But I managed to get the dye quite easily from a website, but it cost a fortune. I can see why it's generally just used in cooking and in small quantities. Yes, it's very effective, but that's precisely why it's not used as a dye. Okay, it cost a fortune. It cost a fortune का क्या मतलब है? कि कोई चीज़ आपको बहुत महंगी मिले, आप कहते हैं it cost a fortune. Cost a fortune means very, very, very expensive. So option A, cochineal. Insect है, insect बेचारे को मार के रंग बनाते हैं, उसका कचूमर निकाल के ना, उसका क्या बोलेंगे, मिल्क शेक बना के, then they make this thing, dye. All right, let's go on. Question number 30, metal oxide. I also read about using metal oxide. Apparently you can allow iron to rust while it's in contact with the fabric, and that colours it. Yes, that works well for dyeing cotton. But you have to be careful as the metal can actually affect the fabric, and so you can't expect to get a lot of wear out of fabrics treated in this way. Okay, metal can affect the fabric. E, it can damage the fabric. Metal can affect the fabric. के लोहे के साथ कपड़ा रख दे, नहीं जंग लग जाता है कपड़े को, बाज़ का उतरता ही नहीं है. So this is another way of actually using the dyes. So correct answer for question number 30 is E. अच्छा, अब ये सारे आंसर्स इसी ऑर्डर में लिखने हैं, यानी 25 का आंसर C, 26 का F, 27 का H, 28 का D, 29 का A और 30 का E. सेम ऑर्डर, ऑर्डर चेंज नहीं करना.